Welcome to Grammar Lessons from BM English Speaking. Let's understand in this unit number 19 the usage of a, an, and the. They are called articles. What do you see on the screen? There are 3 pens here. Let's say you get an instruction. Please pick up a pen. A pen, which means any one pen. A pen on the left, or the pen in the center, or the pen on the right. Pick up a pen. कोई भी एक पेन उठाओ. What do you see on your right hand? There's only one pen here. Let's say you get an instruction. Please pick up the pen. The pen means the particular pen, the specific object that you are talking about. एक निश्चित पेन की बात हो रही है. Let's understand the usage of a or an and the articles using different examples. Jaipur is a wonderful city. So there are many wonderful cities in India. Jaipur is just one of them. Jaipur is known as the Pink City of India. भारत में पिंक सिटी कितने हैं? सिर्फ एक. इसीलिए द पिंक सिटी. द इसलिए उपयोग किया क्योंकि पिंक सिटी यूनिक है. I have got a smartphone. दुनिया में बहुत सारे स्मार्टफोन हैं. मेरे पास एक स्मार्टफोन है. A smartphone. The smartphone has a dictionary. मेरे स्मार्टफोन में डिक्शनरी है. मैं एक निश्चित स्मार्टफोन की बात कर रहा हूं. आई एम टॉकिंग अबाउट अ स्पेसिफिक स्मार्टफोन विच इज माई स्मार्टफोन. प्लीज गिव मी एन आंसर. बहुत सारे उत्तर हैं. मुझे एक उत्तर दो. कैन यू रिपीट द आंसर प्लीज? क्या तुम तुम्हारा उत्तर दोहरा सकते हो? मैं एक निश्चित उत्तर की बात कर रहा हूं. आई एम आस्किंग अबाउट द specific answer that you gave. Walking is a type of exercise. बहुत अलग अलग तरीके से हम एक्सरसाइज कर सकते हैं. Walking उनमें से एक है, इसीलिए a type of exercise. Walking is the only exercise with zero injury. Walking एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसमें इंजुरी बिल्कुल भी नहीं होती है. The only क्योंकि हम उसे यूनिक बता रहे हैं. ध्यानचंद वॉज अ हॉकी प्लेयर. ध्यानचंद एक हॉकी प्लेयर था. बहुत सारे हॉकी प्लेयर आके जा चुके हैं. ध्यानचंद उनमें से एक था. ध्यानचंद इज द बेस्ट हॉकी प्लेयर एवर. अभी जब हम उसकी यूनिकनेस की बात करते हैं तब हम द बेस्ट हॉकी प्लेयर बोलेंगे. लेट्स लुक एट सम मोर एग्जांपल्स. कविता इज अ मैनेजर. देयर आर मेनी मैनेजर्स and Kavita is one of them. Kavita is the youngest manager. हमने द क्यों लगाया? क्योंकि youngest कभी भी एक ही होता है, इसलिए the youngest. I have an appointment letter from a company. मेरे पास एक अपॉइंटमेंट लेटर है, इसीलिए उसमें an लगेगा. The appointment letter mentions my job profile in detail. तो मैं मेरे अपॉइंटमेंट लेटर की जब बात करूंगा तब मैं उसमें द लगाऊंगा. द अपॉइंटमेंट लेटर. दिस इज अ गिफ्ट फॉर यू. बहुत सारे गिफ्ट है, ये उनमें से एक है. द गिफ्ट इज वेरी स्पेशल. अब मैं निश्चित गिफ्ट की बात कर रहा हूं. मैं जो गिफ्ट दे रहा हूं उसी की बात कर रहा हूं. द गिफ्ट इज वेरी स्पेशल. द गिफ्ट दैट यू रिसीव्ड. एन आर्टिकल डिस्क्राइब्स अ नाउन. वी यूज A describes any noun, not a specific, but of course one in quantity. An describes any noun starting with the sound of A, E, I, O, U, which are called vowels. And the describes a particular or a specific noun more than one in quantity or one. Let's understand the correct choice of the article a and an depends on the initial sound of the noun.
not on the starting letter of the noun. There are nouns that begin with E and U but have U sound. We say a university or a European, pronounced university or European. We use an for nouns where the starting letter H is not pronounced and the second letter O, an R, an honest man. Also, an MBA pronounced as MBA. We don't use a or an with words with only single form. Water, air, rice, money, salt, plastic, music, cricket, hair, etc. We don't use the before next, last, this, plus, week, month, year, winter, Monday, etc. Let's look at an example. He arrived on Monday. We don't say we arrived on the Monday. Did you attend the meeting last week? Not the last week. Thank you.